Welcome back, guys. Okay, so we were seeing the lower pairs. Okay, lower in the lower pair we saw the turning pair, sliding pair, and the rolling pair. There's another, we will also see the screw pair. Screw screw pair. Screw pair की क्या example है? We will see also. It's also a lower pair. Nut and bolt. Nut and bolt, but nut and bolt forms the screw pair. All these are the lower pairs. If we see the what are the higher pairs में हम देखते हैं, the example is the cames. Okay, cames and followers. इनको क्यों कहते हैं हायर पेयर? क्योंकि वट आर सो क्या मतलब होता है हायर पेयर्स का? हायर पेयर्स वो होते हैं जिसमें हम देखते हैं कि एक से ज़्यादा किस्म की मोशंस। इसमें हम देखेंगे एक तो रोटेटरी मोशन भी आ गई, यानी कि टर्निंग मोशन भी आ गई, थोड़ा सा स्लाइडिंग मोशन भी आ गई। ओके, सो नेक्स्ट वी विल सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मोशन. What are the different types of the motions? First we will see the completely constrained motion. Completely constrained motion. What is basically the completely constrained motion? मतलब इसमें क्या है कि जो दो लिंक्स हैं, अगर हम उसमें जो हैं उनके दरमियान जो रिलेटिव मोशन को अगर हम रिस्ट्रिक्ट करें इन ओनली इन द सिंगल डायरेक्शन और इन द सिंगल वे or a single types, we restrict the motion in the particular direction. We will not see its motion into more than one direction. Okay, then it becomes the completely constrained motion. For example, if we see a peg in a square hole, okay, or a square bar in a square hole, it is a square bar in a square hole. If we see, we can move it in this direction, to and fro, in and out. However, we cannot rotate it. So such type of the motion is called as completely constrained. We have constrained its motion, but in a particular direction, in a particular single direction. Okay. There's another example. If there exists if there is a roller, if there is a hole, and in the hole there exists a shaft, but on the outer side, see, I will give an example. There exists a hole, and the hole we apply, we use an what we say that circular shaft. ठीक है, जब हमने इसके थ्रू डाला सर्कुलर शेफ्ट, वी कैन से दैट इसको जो है, इसकी जो मोशन है, एक तो टू एंड फ्रो भी हो सकती है और रोटेटरी भी हो सकती है। ओके, ट्रांसलेटरी भी हो सकती है और रोटेटरी। बट अगर हम इसको एंड्स पे कॉलर्स लगा सकते हैं या पिन्स लगाएंगे, तो उससे क्या होगा, इसकी जो मोशन है टू एंड फ्रो वो रुक जाएगी, और ओनली वी विल सी इट्स रोटेटरी मोशन। सो दिस टाइप ऑफ अ मोशन इज ऑल्सो द कंस्ट्रेंड मोशन। ओके, सो आई थिंक कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन अब आपको समझ में आ गया। द नेक्स्ट इट इज इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन। इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन क्या है कि दैट इज द अपोजिट ऑफ दिस। दूसरा जो है दैट इज इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड एज द टर्म सजेस्ट्स। ठीक है, इसमें सीधे ही बता रहा है कि इसमें हम जो हैं मोशंस मोर देन वन डायरेक्शंस में हम देखते हैं। ठीक है, सो वही है राउंड सर्कुलर बार in the round hole. Okay, then the third is successfully constrained motion. Successfully constrained motion. Okay, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन में क्या है कि हमने जो है
फोर्स की हेल्प लेकर हमने उसकी जो मोशन है वो मोशन को रिस्ट्रिक्ट किया है, कंस्ट्रेन किया है, अदरवाइज वो उस डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है. सो आई विल गिव ए सिंपल एग्जांपल. इफ देयर एग्जिस्ट अ बेयरिंग, ठीक है, ठीक है, तो हमने ये एक बेयरिंग रखी यहाँ पे, ठीक है, इसमें हमने एक शाफ्ट डाला. ओके, एंड देयर एग्जिस्ट अ शाफ्ट, और शाफ्ट पे हमने लोड डाला. अब यही है कि जो ये शाफ्ट हैं, दिस शाफ्ट विल ओनली रोटेट, ठीक है, बट अगर हम फोर्स हटाएंगे तो ये ऊपर नीचे भी कर सकता है. सो इट इज़ जस्ट एज ऑफ नाउ बिकॉज ऑफ द फोर्स इट्स मोशन हैज़ बीन कंस्ट्रेन्ड. However, if we remove the force, its motion will be in more than one direction. So its force, its motion has been constrained only because of the force, or we can say its motion is constrained temporarily. In this, such type of motion is considered as a successfully constrained motion. Okay. तो ये हो गया रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ मोशन भी. सो फार अगर हम देखेंगे, वी सा द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लिंक्स, वी सा द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पेयर्स, वी आल्सो सा द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मोशंस. ओके, okay guys, now what we will saw, the when the number of the links are connected by the help of a joint, and they also possess the relative motion to one another, they form a chain. Okay, link 1, link 2, link 3, link 4, and there are the joints. ठीक, so they form a chain. ठीक, this is a chain. So what are the chain is formed. कब बनती है chain? जब series of links जो हैं, जिनके दरमियान जो है relative motions होगी और वो connect हैं एक दूसरे के साथ by a joint. Okay, तो तब बनती है हमें एक chain. So now we will see a formula that shows the relationship between the joints and the links. Okay, and because of that formula we will come to know what type of the chain is it. Okay, so if we see, there is a formula that is the J is equal to 3 by 2 L 3 by 2 L minus 2. Okay, now फॉर हम क्या कहते हैं कि इसे जो ये वाली रिलेशन है, इसमें हमें ये पता चलता है व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द लिंक्स एंड द जॉइंट्स, और इससे हमें ये भी पता चलता है कि चेन्स किस टाइप की हैं, वेदर इट इज़ काइनेमेटिक, वेदर इट इज़ अनकंस्ट्रेन्ड चेन, ओके, और वेदर इट इज़ ए स्ट्रक्चर. गाइज, सो हम देखते हैं कि देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द चेन्स. फर्स्ट इज अ काइनेमेटिक चेन, kinematic chain. Okay, next is the unconstrained chain, and the third is the actually the frame or the structure, frame or structure. ठीक, and what is it? Look, अगर हम देखेंगे इस फॉर्मूला के हिसाब से, अगर जे जो वाला पोर्शन है, इसका जो ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा, इस वाले पार्ट के बराबर, मीन्स दैट अगर हमारे पास कोई फिगर है, ठीक, जहाँ पे डिफरेंट लिंक्स आर देयर, ओके, एंड वी विल ट्राई टू काउंट द डिफरेंट नंबर ऑफ द लिंक्स एंड वी विल देन कंपेयर इट विद दिस वेरी पार्ट दैट इज जॉइंट. अगर दोनों साइड्स बराबर होंगे, देन एट दैट टाइम वी कंसिडर दैट एज ए काइनेमेटिक चेन. उस समय हम उसको कहते हैं काइनेमेटिक चेन. एंड वन मोर कंसेप्ट इज देयर, दैट्स द डिग्री ऑफ फ्रीडम. वी विल लेटर नो दैट व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम. सो बट हियर आई वुड लाइक टू मेंशन दैट कि फॉर द काइनेमेटिक चेन डिग्री ऑफ फ्रीडम बन जाती है इक्वल टू 1 के बराबर. ओके, ओके. द नेक्स्ट आई टोल्ड यू अबाउट द अनकंस्ट्रेन्ड चेन.
ठीक। अनकंस्ट्रेंड कब होती है? जब हम देखते हैं कि व्हेन वी सी द नंबर ऑफ लिंक्स आर मोर, ओके, or we can say that then this part is less than this very part, okay, when the joints are less, joints are less number comparatively to this part, or we can say the links are more. When we have the more links, it means that there is the more types of the motion, more relative motion, and there are the less number of joints are existing, okay. We can say that I will show that if we see that J part is less than 3 by 2 L minus 2, then at that time we'll see it will become the unconstrained chain, okay. It will be unconstrained, and for the unconstrained chain we will see that the degree of freedom is greater than 1, okay. That means the links will be able to show the motion in the they have the freedom to move in the more than one directions, okay. Next, there if we see J greater than the 3 by 2 L minus 2, here we see that the joints जो वाला part है that is more, when the joints are more, when joints are more compared to that of the links, it means that they will possess the less freedom to move. For such type of the structures, for such type of the chains, we will see that the motion is zero. There is no relative motion, and we will see those types of the figures or those types of the जो links होते हैं जो कि connected होते हैं एक दूसरे के साथ, फ्रेम या स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इनके लिए जो हम देखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज इक्वल टू दी, हम लोग ज़ीरो देखते हैं, उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़ीरो देखते हैं. देयर इज़ द अनदर टाइप ऑफ द, जो कि हम डिग्री ऑफ फ्रीडम में ही देखेंगे. देयर आर द अनदर टाइप ऑफ द हम स्ट्रक्चर्स जो कि हम देखेंगे, दे आर कॉल्ड ए सुपर स्ट्रक्चर. सुपर स्ट्रक्चर का हम यहाँ पे नहीं देखेंगे. फॉर दोज डिग्री ऑफ फ्रीडम इज एक्चुअली द लेस दैन ज़ीरो, ओके, यानी कि दे पोजेस द नेगेटिव डिग्री ऑफ फ्रीडम, ओके. सो गाइज, अब हम देखेंगे द डिफरेंट, आई विल ट्राई टू, ताकि आप लोगों को जो है अच्छे से समझ आ जाए. मैं आपको जो है कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा. Guys, before we move ahead, I will also forgot to mention one concept, the different types of the joints. Joints का आपको पता है अब, what are the joints? जो कि दो लिंक्स को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, ठीक है. ओके, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द जॉइंट, जो बेसिक जॉइंट है दैट इज द बाइनरी जॉइंट, ओके. बाइनरी जॉइंट, बाइनरी जॉइंट क्या जॉइंट होता है? जो कि दो मेंबर से बनता है, जो दो लिंक्स से बनता है. व्हेन द टू लिंक्स आर देयर, दे पोजेस the relative motion between the two, they possess the relative motion between the two, and they form a binary joint, okay. Next to the binary joint there is a ternary joint, ठीक, जो कि आपको याद रखना है, that is a ternary joint. What is the ternary joint? It is simply when the three links are connected at a point, okay, link 1, link 2 and link 3, and they are connected at a point, and that joint forms the ternary joint. आपको अब यहाँ पे क्या याद रखना है? जो वन टर्नरी जॉइंट होता है दैट्स इक्वल टू द टू बाइनरी जॉइंट्स. बस ये कंसेप्ट अब आप लोगों को याद रखना है, ओके. सो हमारा अब हो गया बाइनरी जॉइंट के बाद टर्नरी जॉइंट भी. टर्नरी जॉइंट के बाद देन नेक्स्ट टर्नरी जॉइंट इज द व्हाट वी कॉल क्वाटरनरी जॉइंट, ओके. तो कब बनता है एक क्वाटरनरी जॉइंट? जब चार लिंक्स एक जॉइंट पे जो है कनेक्टेड हो. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देन देयर इज अ वन लिंक, देयर इज अ टू लिंक, देयर इज अ थ्री लिंक एंड देयर इज फोर लिंक. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट बिकम्स द क्वाटरनरी जॉइंट. अब आपको याद क्या रखना है कि वन क्वाटरनरी जॉइंट जो है वो किसके बराबर होता है? थ्री बाइनरी जॉइंट्स के बराबर. तो मैंने यहाँ पे दो कंसेप्ट्स बोले. एक तो बाइनरी टर्नरी जॉइंट होता है बराबर, एक टर्नरी जॉइंट होता है बराबर
कितने बाइनरी जॉइंट्स के बराबर? 2 बाइनरी जॉइंट्स के बराबर। और एक क्वाटरनरी जॉइंट होता है बराबर 3 बाइनरी जॉइंट्स के बराबर। क्योंकि मैंने इसलिए मेंशन किया क्योंकि ये दीज आर गोइंग टू हेल्प अस इन द अपकमिंग जो है हमें न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। ओके okay guys, so now I'm going to give you some examples that will help us to know whether it is a kinematic chain, it is the unconstrained chain, or it is a frame or a structure. So here it is a, see, okay guys, सो हमने अब एक फिगर बनाई है जिसमें कि हम देखेंगे डिफरेंट लिंक्स है। इफ़ वी सी दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिंक्स आर देयर, 1 2 3 and 4 links. Okay, and how many binary joints are there? This is a 1 link and 2 link, दो लिंक्स के बीच में होगा एक बाइनरी जॉइंट, यहाँ पे एक बाइनरी जॉइंट, यहाँ पे भी एक बाइनरी जॉइंट, और यहाँ पे भी एक बाइनरी जॉइंट। अगर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, व्हाट वी हैव अ फार्मूला J इज इक्वल टू 3/2 L माइनस 2। ठीक है, तो हम हमारे पास जे कितने हैं, हाउ मेनी जॉइंट्स आर देयर, हाउ मेनी, जे इज़ एक्चुअली नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट्स, ये अब आपको याद रखना है, जे इज़ एक्चुअली बाइनरी जॉइंट्स। ठीक है, बिकॉज हम हर एक जॉइंट को कन्वर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ बाइनरी जॉइंट। ठीक, चाहे हमारे पास क्वाटरनरी जॉइंट हो, चाहे हमारे पास टर्नरी जॉइंट हो, इसको हम बाइनरी जॉइंट में ही कंसिडर करते हैं। सो एक्चुअली व्हाट जे इज़ ए बाइनरी जॉइंट। ओके, सो जे हमारे पास कितने जॉइंट्स आ गए, 4 जॉइंट्स आ गए। तो हमारे पे J इज़ 4, और हमारे पास L कितना है, L भी है हमारे पास, लिंक 1 2 3 and 4, हमारे पास लिंक्स भी 4 हैं। ठीक, इफ़ वी अप्लाई दिस फार्मूला हियर, दिस वैल्यूज इन द अबव फार्मूला, सो व्हाट बिकम्स 3/2 into 4 minus 2, then we will see how much it is। 3 2s हो गया 6